Light on learners, because today we level up with the letter L. Welcome back to our word meaning series. From words that sound smooth and lucid to ones that hit hard like laborious and ludicrous. This list is all about to level up your vocabulary game big time. So loosen up your brain, lean in, and let's unlock the language vault together, because today we are learning, laughing, and leveling up with letter L. The first is laborious, and this means something is laborious when it requires a lot of effort and hard work. Laborious ऐसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट, टाइम, हार्ड वर्क इन्वेस्ट करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, ठीक है. इट ऑफन रेफर्स टू टास्क जो कि टायरिंग है, स्लो है, जिनमें टाइम लग रहा है, ठीक है, आप फटाफट से नहीं कर पा रहे. दिस वर्ड हाईलाइट्स डिफिकल्टी रादर दैन स्किल. डेली लाइफ में कहीं से आपको लॉन्ग नोट्स कॉपी करने हैं, ठीक है, बाय हैंड, इट कैन बी लेबोरियस टास्क, ठीक है. इट सजेस्ट्स persistence. Example, the research process was long and laborious. Now we have lacerate, and this means to tear or cut something deeply. Lacerate का मतलब होता है जब आप फिजिकली या फिर इमोशनली कहीं पे बहुत डीप कट मारो या फिर उसको टीयर करो, ठीक है. इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर वुंड्स कॉज्ड बाय शार्प ऑब्जेक्ट्स. फिगरेटिवली हार्श वर्ड्स जो होते हैं, रूड वर्ड्स, क्रूअल वर्ड्स, कैन लैसरेट फीलिंग्स, कैन हर्ट फीलिंग्स, ठीक है. This word suggests pain and damage. Example, the broken glass lacerated his arm. Now we have Laggard, and this is someone who moves slowly or falls behind others. ये एक ऐसा person है जो कि दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है एंड पीछे रह जाता है, ठीक है. इट कैन रेफर टू फिजिकल मूवमेंट और प्रोग्रेस इन वर्क और डेवलपमेंट. ये वर्ड कैरी करता है माइल्ड क्रिटिसिज्म. डेली लाइफ में एक स्टूडेंट जो कि अपना असाइनमेंट्स डिले करके दे रहा है, टाइम पे नहीं दे रहा, ठीक है, यू वुड कॉल हिम लैगार्ड. लाइक समवन हु इज नॉट पंक्चुअल, हु इज नॉट ऑन टाइम, हु लैग्स बिहाइंड, ठीक है. एग्जाम्पल, ही वॉज अ लैगार्ड इन अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी. Now we have lament, and this means to express deep sadness or regret about something. Lament का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ के बारे में deep sorrow, grief या फिर regret express करते हो, ठीक है. It can be used as a verb or a noun. ये word appear होता है emotional, poetic और formal context में. Daily life में people would express lament about lost opportunities or mistakes. ये suggest करता है sadness mixed with reflection. Example, she lamented the loss of her childhood home. Now we have languid, and this is when someone feels that they are weak, tired or lacking energy. Languid का मतलब होता है, it basically describes a state of tiredness, weakness, energy नहीं है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, ठीक है. You feel very lazy and you feel very tardy, ठीक है. It often suggests slow, relaxed movements rather than pain. ये word describe करता है people, mood और even weather. डेली लाइफ में हॉट आफ्टरनून्स कैन फील लैंग्विड, ठीक है. इट बेसिकली इम्प्लाइज लो वाइटलिटी, कि आपका कुछ करने का मन नहीं कर रहा, आलस मारने का मन कर रहा है, ठीक है. एग्जाम्पल, ही फेल्ट लैंग्विड आफ्टर द लॉन्ग जर्नी. नाउ वी हैव लैंग्विश, एंड दिस मीन्स टू सफर और ग्रो वीकर ओवर टाइम. लैंग्विश का मतलब होता है कि ओवर टाइम आप वीक होते जा रहे हो, सैड होते जा रहे हो, मुरझाए जा रहे हो, निग्लेक्टेड फील कर रहे हो, ठीक है. इट ऑफन रेफर्स टू पीपल, होप और कंडीशन. ये वर्ड सजेस्ट करता है स्लो डिक्लाइन रादर दैन सडन कोलैप्स. डेली लाइफ में टैलेंट्स जो होते हैं, दे मे लैंग्विश विदाउट एनकरेजमेंट, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, बचपन में आप बहुत अच्छा डांस करते थे, ठीक है, दैट वॉज अ टैलेंट दैट यू हैड, बट ओवर टाइम बिकॉज यू डिडंट प्रैक्टिस इट एंड आपने वो छोड़ दिया, तो वो जो है, अब आपकी जो स्किल थी, आपका जो टैलेंट था, अब वो कम हो गया, ठीक है. एग्जाम्पल, द प्रोजेक्ट बिगेन टू लैंग्वेज ड्यू टू लैक ऑफ सपोर्ट. नाउ वी हैव लैंगुअर, एंड दिस इज अ फीलिंग ऑफ टायर्डनेस और स्लो हेवी वीकनेस. लैंगुअर जो है फिजिकल या फिर मेंटल वियर्डनेस या फिर लैक ऑफ एनर्जी को रेफर करता है. इट ऑफन सजेस्ट स्लो हेवी टायर्डनेस रादर देन शार्प पेन. ये वर्ड स्लाइटली पोएटिक टोन कैरी करता है. डेली लाइफ में एक्सट्रीम हीट कैन कॉज लैंगुअर, ठीक है. एग्जाम्पल, अ सेंस ऑफ लैंगुअर सेटल्ड ओवर द रूम. Now we have lavatory, and this is a room used for washing or using the toilet. Lavatory basically means a room or place with facilities for washing or using the toilet. ये formal word है which is used in public spaces. This word sounds polite and neutral.
डेली लाइफ में एयरपोर्ट्स पे आप साइंस देखोगे विच पॉइंट टू द लैबोरेटरी, ठीक है, इट रेफर्स टू हाइजीन एंड सैनिटेशन. एग्जाम्पल, द लैबोरेटरी इज लोकेटेड नियर द एंट्रेंस. Now we have leeway and this is an extra freedom or space to make decisions or changes. Leeway जो है एक आपको extra time या फिर आपको freedom या फिर space दी हुई है to act or decide however you want to, ठीक है, without any kind of guidance from the above or interruptions from the above or instructions, ठीक है. It suggests flexibility rather than strict limits. ये word use होता है in planning और ruling. Daily life में deadlines may give some leeway कि आपके पास अगर आज मंडे है, आपके पास नेक्स्ट मंडे तक का टाइम है, तो आपके पास यू हैव अ स्पेस, यू हैव टाइम टू कवर अप दैट टास्क, ठीक है. तो आप हो सकता है आप आज ना करो, आपको पता है कि आप ये काम जो है 3 दिन में कर सकते हो, तो आप आराम से अपना 4 दिन मजे मारोगे, उसके बाद जो है थर्सडे फ्राइडे को करने बैठोगे, ठीक है. एंड मोमेंट टास्क. इट इम्प्लाइज अलाउंस. एग्जाम्पल, द टीचर गिव द स्टूडेंट सम लीवे विद सबमिशंस. Now we have legible and this is when it is clear and easy to read. Legible का मतलब होता है जब कोई चीज easily आप पढ़ पा रहे हो, clear है, समझ पा रहे हो कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है. It often refers to handwriting or printed text. This word focuses on clarity. Daily life में neat handwriting is legible. It implies readability. Example, her handwriting is neat and legible. Now we have legion and this means a very large number of people or things. ये basically refer करता है to a amount, ठीक है, to a large amount of people or things gathered somewhere, ठीक है. ये पहले जो है ओरिजिनली रोमन आर्मी में यूज किया जाता था, ठीक है, टू रेफर अ यूनिट, एंड टुडे इट इज ऑफन यूज्ड फिगरेटिवली. डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स को या फिर फैंस को कैन बी डिस्क्राइब्ड एज लेजेंड. इट इम्प्लाइज वास्टनेस. एग्जाम्पल, शी हैज अ लेजेंड ऑफ सपोर्टर्स. Now we have levy and this means to officially collect or impose a tax or charge. Levy का मतलब होता है जब आप officially किसी पे या तो टैक्स या फिर कोई चार्ज इम्पोज कर रहे हो या फिर कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है. इट कैन बी यूज्ड एज अ वर्ब और अ नाउन. ये वर्ड कॉमन होता है गवर्नमेंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट्स में. डेली लाइफ में अथॉरिटीज लेवाई फाइन्स और टैक्सेस. एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट लेवाइड अ न्यू टैक्स. दे imposed a new tax. Now we have libel and this is a false written statement that harms someone's reputation. Libel जो होता है it basically refers to a statement which is false, which is not true, ठीक है, वो जो लिखी जाती है किसी की reputation harm करने के लिए. ये legal term है, ये word apply करता है only to written or published material. Daily life में false articles होते हैं which can be considered libel, कि आप वो लिख रहे हो किसी को defame करने के लिए. Example, the newspaper was sued for libel. Now we have Liege and this is a ruler or lord to whom loyalty and service are given. Liege जो होता है लॉर्ड को, रूलर को या फिर मास्टर को रेफर किया जाता है जिस पे आप जो है जिसके साथ आप लॉयल हो या फिर उनको आप कोई अपनी सर्विस दे रहे हो, ठीक है. दिस वर्ड कम्स फ्रॉम फ्यूडल सिस्टम्स. ये वर्ड यूज किया जाता है विद आइडियाज ऑफ एलिजियंस एंड ड्यूटी. टुडे इट साउंड्स हिस्टोरिकल एंड लिटरेरी. It implies obedience and loyalty. Example, the knight swore loyalty to his liege. Now we have limber and this basically means that someone is limber when their body is flexible and moves easily. Limber ऐसी चीज को या फिर ऐसे इंसान को डिस्क्राइब करता है जो कि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, सपल है, इजिली बेंट है, जैसे भी आप शेप उसको देना चाह रहे हो वैसे मोड़ पा रहा है, ठीक है. इट कैन रेफर टू द बॉडी और टू द ऑब्जेक्ट्स. ये वर्ड में नॉर्मली पॉजिटिव टोन होता है. डेली लाइफ में स्ट्रेचिंग हेल्प्स कीप मसल्स लिम्बर, फ्लेक्सिबल. एंड एग्जाम्पल, शी स्टेड लिम्बर विद रेगुलर एक्सरसाइज. Now we have limpid and something is limpid when it is clear, pure and easy to see through. Limpid का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कि ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है, प्योर है एंड easy to understand है. It is often used for liquids or writing. ये word suggest करता है purity and clarity. Daily life में clean water can be described as limpid. Now we have Lithe and this basically describes a person who is slim, flexible and graceful. ठीक है, कोई बंदा जो कि अपने मूवमेंट्स में, अपनी चाल में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ग्रेसफुल है, थिन है, ठीक है. इट इज़ ऑफन यूज्ड पॉजिटिवली फॉर बॉडीज और मोशंस. ये वर्ड सजेस्ट करता है ईज एंड एलिगेंस. डेली लाइफ में डांसर्स जो होते हैं दे आर यूजुअली लीथ. एग्जाम्पल, द लीथ जिमनास्ट मूव्ड एफर्टलेसली.
एजिलिटी है पर्सन में, फ्लेक्सिबिलिटी है. Now we have loiter and this means to stand or wait around without any clear purpose. Loiter का मतलब होता है जब आप without any kind of clear purpose आप बस घूम रहे हो या फिर खड़े हुए हो कहीं पे, ठीक है, आपका कोई रोल नहीं है. It often has a slightly negative or suspicious tone. ये word यूज किया जाता है public या फिर legal context में. Daily life में signs want people not to loiter, कि यहाँ पे जो है खड़े नहीं रहना, अपना काम करो और चलते बनो. Example, they were told not to loiter outside the shop. Now we have lucid, and something is lucid when it is clear, logical and easy to understand. Lucid word describe करता है ऐसी चीज जो कि logical है, clear है. It can refer to writing, speech or mental state. ये word suggest करता है sharp clarity. Daily life में good explanations are lucid, something which is easy to understand. Example, she gave a lucid explanation of the topic. Now we have lucrative, and this is when some job or business earns a lot of money. ये word describe करता है something that brings in a lot of money or profit, ठीक है. It is used for jobs, profits or deals. ये word focus करता है on financial gain. Daily life में कुछ professions ऐसे होते हैं which are considered lucrative, मतलब इनमें जो है बहुत पैसा है. Example, she accepted a lucrative job offer. Now we have ludicrous, and this is when it is extremely silly or unreasonable. ये word basically suggest करता है something which is very unreasonable, foolish and ठीक है absurd, that it becomes laughable, कि तुम्हें हंसी आए कि भाई क्या ये, ठीक है. It highlights extreme silliness. ये word often express करता है disbelief और mockery. Daily life में कुछ excuses होते हैं जो कि ludicrous sound करते हैं कि क्या excuse है भाई, ये बहाना तो अच्छा ढूंढ लो. Example, his claim sounded completely ludicrous, ridiculous basically. Now we have lunatic, and this is a person who behaves in a very foolish or irrational way. Lunatic refer करता है एक ऐसे person को जो कि बहुत ज़्यादा widely irrational है, crazy manner में behave कर रहा है, irritating है, ठीक है. Historically it was a medical term, but now it is considered offensive. ये word often use किया जाता है informally or jokingly. It should be used with care. Example, he drove like a lunatic. Now we have lurk, and this means to stay hidden while waiting or watching secretly. Lurk का मतलब होता है कि कहीं पे आप कोई चीज को देख रहे हो, ठीक है, ये वेट कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, बट यू स्टे हिडन एंड यू स्टे इन दी बैकग्राउंड. आप फोकस में नहीं आ रहे हो कि आपको कोई देख ना ले, ठीक है. इट ऑफन कैरीज अ सेंस ऑफ सीक्रेसी और सस्पिशन. ये वर्ड कैन रेफर टू फिजिकल प्रेजेंस और ऑनलाइन बिहेवियर. डेली लाइफ में डेंजर में लर्क इन डार्क वैलीज. फोकस में नहीं है, आपको नहीं दिख रहा कि डेंजर हो सकता है, बट इट इज अ पॉसिबिलिटी कि वो वहां पे हो, ठीक है. एग्जाम्पल, ही लर्क्ड बिहाइंड द डोर वेटिंग टू सरप्राइज हिम. If you found this video useful, make sure to check out our specially designed vocabulary and grammar books. You can order them directly through our website www.cambriona.com, for which the link is given in the description below. They are perfect for students preparing for exams like CUET, IPMAT, NIFT, BITSAT, NDA, or any other after class 12th entrance exams where English is tested. The first book in this series is a vocabulary book. It's compact, simple, and structured, covering idioms, fixed prepositions, foreign words, and root words. It makes learning more organized, easier, and faster. The second book in this series is a vocabulary workbook. It is designed to help you practice and retain the words from the main vocabulary book. With simple, selective, and varied exercises, it helps you build confidence and use each word correctly. It's the perfect companion for regular practice and effective revision. The third book in this series is a grammar book. It's a focused, practical guide that covers only the grammar concepts most relevant for your exams. Each rule is explained clearly and simply so you can understand and apply it quickly. This book helps strengthen your grammar, remove confusion, and build confidence step by step. The fourth book in this series is a grammar workbook. It offers practical, exam-oriented exercises that focus on areas where students usually make mistakes. In addition, it includes a few concept-building questions that may not be directly asked in your exams but are designed to strengthen your base and remove common confusions so you can apply grammar rules
confidently. This workbook is a structured, student-friendly tool created to strengthen your grammar and build real exam-level confidence. If this video helped you, hit the like button and subscribe to the channel to stay updated. Thank you.